Now children, today let's start with chapter number 3, that is adaptation and animals. So let's study about adaptation. Animals are found all over the world. They live in deepest ocean and on highest mountain. They are found in the hottest desert as well as in very cold place. The surrounding in which animals live comfortably, उसको क्या कहा जाता है? Habitat. So animals living in different habitats adapt themselves to survive their surroundings. According to their habitats, animals are divided into 5 groups. These groups are terrestrial, जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं, एम्फीबियल जो लैंड वाटर दोनों में रहते हैं, एर्बोरियल ठीक है जो पेड़ पे रहते हैं, और एरियल जो हवा में होते हैं. राइट. फर्स्ट इज terrestrial animal lives on land like elephant, tiger, lion, rhinoceros. They all are terrestrial animal. They live on the land. They have strong legs which help them to walk long distances. They can run to escape from the enemies. This helps, and with the help of their lungs they breathe. Right. Their sense organs and brain are well developed in order to sense the changes in the surrounding. कुछ भी changes होता है तो उनके इतने very well developed sense organ होते हैं जिससे वो उनको fastly sense करता है. Desert. So in desert there is little water, hot during the day but very cold at night. Camel, snake and desert rats they adapt themselves to this condition. Camel को हम क्या कहते हैं? Ship of Delhi. इसकी thin skin होती है and it can live 10 to 12 days without water. वो water अपने क्या करता है? hump में store कर लेता है. So when the camel does not get water or food, they still survive because of fat in its hump. The broad pads on the bottom of its feet उसको help करता है to run in the sandy desert. Deserts, rats and snakes build deep holes in the sand during day and stay when it is very hot. They come out जब इवनिंग होती है वो तब बाहर आते हैं. पोलर रीजन वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड. जो पोलर बियर्स होते हैं उनके थिक फर होते हैं जो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. राइट. लाइक पेंगुइन विच लिव इन द फ्रीजिंग कंडीशन हैव थिक लेयर ऑफ फैट कॉल ब्लबर. और वो कहाँ रहता है? ग्रुप्स में रहते हैं जिससे वो अपने आप क्या करते हैं? वॉर्न करते हैं. देन वी हैव एक्वेटिक एनिमल्स. So animals that lives in water are known as aquatic animals. Fish, snail, turtles, crab, they all are aquatic animals. इनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. फिश ब्रीथ द एयर डिजॉल्व इन वाटर थ्रू स्पेशल ऑर्गन जिन्हें गिल्स कहते हैं. दे हैव फिन्स टू हेल्प देम टू स्विम एंड बैलेंस इन वाटर. वी हैव सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स. दे डू नॉट हैव गिल. दे हैव लंग्स टू ब्रीथ. दे हैव टू कम अप टू द वाटर सर्फेस टू ब्रीथ. राइट. Water birds like ducks and webbed feet which help them to swim. Birds like crane, egrets and flamingo. They have long legs जो उनको help करते हैं to wade in water. Their long beaks help them to catch fish under the water. Then we had amphibians. We have some animals like frogs, toads, newest and salamander. ये both land पे भी रहते हैं, water में भी रहते हैं. We call them amphibians. They have lungs to breathe when on land, and when they are in water, they breathe through their moist testing. Their limbs are also adapted for swimming. Arboreal जो spend करते हैं most of the time on trees like monkeys, squirrel, chameleons, and there are some insects also. Monkey के strong legs होते हैं, arms होता है जिससे वो क्या करते हैं? अपने tail से एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाते हैं. Aerial animals, birds, bats, insects. They spend most of their life in the air. इनको aerial animals कहते हैं. They are the only mammals that can fly. Is bat. Birds have wings to fly. Their bones are hollow, which makes them light in weight, and their body also help them to fly. Insects wings to fly, and birds bird flies. Moths are the beautiful thing. Siberian crane जब वो migrate करती है इंडिया में every year because of the weather condition. So sometimes when a condition of a particular habitat are not favorable, animals क्या करते हैं? They move करते हैं to temporarily basis different places. So migration is the movement of animal or a group of animal from one region to another for certain time interval. और फिर वो वापस आ जाते. Animals migrate to different regions in search of better climate, better food, safe place to live, and to find safe place to lay their egg. What is hibernation? Not all animal migrate. Some animal that can survive in very cold weather for their habitat. So go for long sleep. Hibernation क्या होता है? Deep winter से. जब animals क्या करते हैं? Winter sleep पे चले जाते हैं. उस टाइम क्या कहते हैं? Hibernation. जैसे आपके यूरोपियन ईल्स हो गए, वो स्विम करते हैं सरगासो किसी से Atlantic Sea में for laying their eggs. When animals goes when the weather conditions are not favorable, this has to conserve their energy till the food is available again. Now adaptation of food. First is herbivores. Animals that eat plants are called herbivores. इनकी sharp flat front teeth होती है जिससे लीच को कट कर.
like cows, buffalo, deer, goat, elephant, giraffe. These all are what? These all are herbivorous animals. Then we have carnivorous animals that eat flesh of other animals. Tiger, lion, jackal. They have long, sharp, tearing teeth, claws with the help them to tear flesh. They have strong legs जो उनको help करते हैं to run fast and catch the prey. Birds of the prey like hawks, eagles, they have sharp beak to tear the flesh, and they also have strong claws, जिसे हम talons कहते हैं, जिससे वो क्या करते हैं अपने prey को catch करते हैं. Then we have omnivores, animals that eat both, जो plant animals दोनों को खाते हैं, like crow. Human being is also an example. Bear, cat और examples are omnivores. Next is parasites, जो क्या करते हैं डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग बींग्स पे फूड के ही, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं. और जो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? फोस्ट से लेते हैं. लाइक मॉस्किटो, हुकवर्म्स, बग्स, राउंड वर्म्स, टेपवर्म्स, लीचेस. दे डू नॉट हैव टीथ, इंस्टेड दे हैव सक्स और सकिंग ट्यूब्स इन देयर माउथ, जिससे क्या करते हैं ब्लड को सक करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट. Now, adaptation for protection. Every animal has to protect itself from its enemy surrounding. It's very important for an animal to protect itself and continue to live and reproduce. There are different types of adaptation in which different animals save themselves. What are these? Many animals protect themselves by running away from an enemy. Listen, my dear Jabba. Some animals change the color to merge with the surrounding. Right? जैसे आपकी कॉर्नोफ्लेग होगा, उसके पास ऐसा क्या होता है क्वालिटी होती है, सो कलर को चेंज कर देता. स्टिक इंसेक्ट्स एंड दीज इंसेक्ट्स हैज कलर विच मर्ज विद द सराउंडिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ग्रास हॉपर्स आर ग्रीन इन कलर, सो दे आर easily visible when found on leaves. द वाइट फर ऑफ पोलर बियर, उसको सराउंड स्नो से मैच करता है. सम एनिमल्स हैव स्पाइन्स और शेल्स ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, लाइक स्नेल्स एंड porcupines. एनिमल जैसे बीप और मैप्सोवन के स्टिंग्स होती हैं. Right? Next is extinct animals. Many animals and plants of ancient times are not no more found because of the fail to adapt themselves according to their changing condition, like climate, food या फिर surrounding. So they all died and were lost forever. Dinosaur, dodo bird, woolly moths, and Archaeopteryx. They are the examples of animals that have become extinct. जो क्या हो गए? Extinct हो गए. Right? Hope you understood the chapter. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.